Today we are doing poem Amanda written by Robin Klein. First of all, I am telling you central idea of this poem. This poem is about the issue of children's growing up and their upbringing. It highlights the struggles faced by the child. Indirectly, the poet stresses that children should not be devoid of freedom and spontaneity in their natural growth. The parents have a great responsibility to bring up their children to be good citizens later. They should see that their children are unnecessarily made to feel depressed. In Amanda, her parents prepare her to be acceptable in the society by restricting her in many ways. But they do not feel that in doing so they curtail her freedom and space. She feels this restriction so much so that she doesn't want to grow up but remain an orphan. Continuous taunting, nagging, and fault finding make her moody. Obviously, the results do not come out as desired. Let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. In this stanza, Amanda is instructed apparently by her parents not to bite her nails and sit lazily with her shoulders bent. This is a bad norm and lacks proper etiquette. The tone and tenor of instruction of how to sit, her present sitting and slouching is not acceptable, is derogatory and insulting. Amanda is getting trained in social and personal etiquette, but the manner is highly demeaning. This implies a suggestion to parents of young girls as to how they should bring up their children, especially the girl. The stress is on making Amanda acceptable to human society. Her name in the end of the stanza is made to sound in the form of an exclamation as irritating or insulting. It expresses Amanda's parents' wrong methods of teaching and training her. इस स्टेंजा में अमांडा को उसके पेरेंट्स के द्वारा क्लियर बताया जाता है कि वो अपने नाखून को मुंह से न काटे और लेजीली अपने शोल्डर्स बेंट करके ना बैठे। ये बुरा तरीका है और इसमें सही तरीके की कमी है। अमांडा को सोशली ट्रेनिंग हो रही है। अमांडा का सामाजिक और खुद से ही ट्रेनिंग हो रही है, परंतु ये तरीका जो है वो क्या है, गलत है। और इसका इशारा यंग गर्ल्स के पेरेंट्स की ओर है कि वो अपने चिल्ड्रन का, स्पेशली गर्ल चाइल्ड का कैसे पालन पोषण करें। अमांडा के मानव समाज में स्वीकार्य होने पर जोर है, परंतु इसका तरीका गलत है। लास्ट में अमांडा का नेम जब एक्सक्लामेटरी के साथ में लिया जाता है तो ये इरिटेटिंग अमांडा के माता पिता के उसे पढ़ाने और उसके ट्रेनिंग करने के गलत तरीकों को बताता है। लेट्स रीड द सेकंड स्टैंजा। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting
blissfully. Languid. Languid means relaxed, peaceful. Emerald means green. Soul inhabitant, lone person living, जो अकेला रहता है. Mermaid, a sea creature, जल परी. Drifting blissfully, moving slowly. This stanza is given in brackets and throws light on the presented situation in the poem. Also, it is an imaginative escape of Amanda, who is highly sensitive and feels greatly troubled by the taunts of her parents. She escapes in imagination to her own world into the sea, which is far away from the nagging commands of her parents. This imagined world is free from any kind of restriction. There are no restraints here for Amanda. She imagines herself like a free and joyful mermaid, sailing freely as she like in the emerald waters. This world of Amanda is a blissful place where she wants to be forever. Mermaid is now a symbol of freedom and wonder for her. It implies that children in such situation act like this. ये जो स्टैंजा जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को हाईलाइट करता है और अमांडा किस तरह से इमेजिनेशन के वर्ल्ड में चली जाती है, बिकॉज शी इज़ नॉट हैप्पी विद द टॉन्ट्स ऑफ हर पेरेंट्स. इसीलिए वो कल्पना के समुद्र में अपने संसार में बचकर चली जाती है, जो उसके माता पिता के तंग करने वाले आदेशों से काफ़ी दूर है. और ये जो इमेजिनेशन वाला जो वर्ल्ड है वो किसी भी प्रकार की रुकावट से बिल्कुल फ्री है. यहाँ अमांडा के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो बिल्कुल फ्री और मरमेड के रूप में अपने आप को सोचती है, जो समुद्र के ग्रीन वाटर में जहाँ चाहे वहाँ घूमती है. और अमांडा अपने इसी इमेजिनेशन वर्ल्ड में हमेशा रहना चाहती है. और यहाँ पे जो मरमेड है वो किसका सिंबल है? फ्रीडम का, वंडर का, स्वतंत्रता और आश्चर्य का एक सिंबल है. इट मीन्स दैट ऐसी सिचुएशन में बच्चे ऐसा ही करते हैं. लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Tidy. Tidy means clean. Update. The poet brings back Amanda in her physical world again. अमांडा इमेजिनेशन के वर्ल्ड में चली गई थी और पोएट उसे वापस फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आते हैं. अमांडा's पेरेंट्स आस्क हर इफ शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क एंड टाइडिड हर रूम. शी इज़ ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू क्लीन हर शूज. The pattern of instructions amounts to treat Amanda in a humiliating tone. It implies that Amanda doesn't care for these instructions as she feels disgusted with the nagging attitude of her parents. Equally, her parents adopt a stern tone involved in "I thought I told you to clean your shoes." The exclamation mark after her name reveals this aspect.
It points to the possibility that Amanda is getting obstinate and her parents are losing their head onto her. कभी फिर से अमांडा को इमेजिनेशन के वर्ल्ड से कहाँ लेके आते हैं, वापस फिजिकल वर्ल्ड में ले आते हैं और अमांडा के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया, क्या उसने अपने रूम को अच्छे से अरेंज कर लिया, क्या उसने अपने जूते साफ कर लिए। और निर्देशों के तरीके जो है वो क्या दिखाते हैं, अमांडा के साथ अपमानित अवस्था में बिहेव करना। इसका मीनिंग है कि अमांडा इन निर्देशों की परवाह नहीं करती क्योंकि वह उसके माता पिता के तंग करने के व्यवहार से काफ़ी परेशानी महसूस करती है। साथ में उसके माता पिता, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। इसमें बहुत ही कठोर आवाज़ में जैसे उससे बात कर रहे हो। उसके नाम के पीछे जो एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया है उससे हमें इस बात का पता चलता है। और धीरे धीरे अमांडा क्या होती जा रही है, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी हो रही है और उसके माता पिता इसी वजह से क्या खोते जा रहे हैं, अपनी शांति खोते जा रहे हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Orphan means one whose parents are dead. Roaming, wandering. Pattern, make designs. Hushed, silent. Bare, shoeless. In this stanza, we find Amanda reacting to her mother's harsh words. She withdraws into her imaginative world again. The first line, I am an orphan, expresses Amanda's helplessness and awful depression. She is greatly dejected and disappointed due to the irrational instructions of her parents, and continuous cautioning simply troubles her emotionally. And she has no shoes on her feet as she creates a pattern on the soft dust with her bare and hushed feet. Hushed means silent. She walks in a hushed manner which throws light on her precarious condition. She cherishes the silence and freedom to do as she likes to do. She likes to remain in her world of imagination due to the nagging instruction of her mother. She loves silence and freedom just because of her parents' yelling and crude kind of commands. इस स्टेंजा में अमांडा अपनी माँ के जो उसकी माँ उसे जो बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे अमांडा उन कठोर शब्दों के रिएक्शन दे रही हो। वो अपने काल्पनिक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में फिर से चले जाती है। एंड आई एम एन ऑर्फन, ये लाइन अमांडा की मजबूरी बताती है, उसकी सैडनेस बताती है। अपने पेरेंट्स के विदाउट एनी राइम और रीजन इंस्ट्रक्शंस के कारण उसका दिल टूट गया है और लगातार क्वेश्चनिंग से वो परेशान हो चुकी है और इससे वो इमोशनली इरिटेट होती है। उसके पैरों में शूज नहीं है और वो सॉफ्ट डस्ट पर बहुत ही शांति से और अपने नंगे पैरों से एक चित्र बनाती है। वो शांत तरीके से चलती है जो उसकी अजीब हालत पर
लाइट डालता है, रोशनी डालता है। वह जो चाहे वो करने के लिए पीस और फ्रीडम से प्यार करती है। वह अपनी माँ के तंग करने वाले निर्देशों के कारण अपने कल्पना के संसार में रहना पसंद करती है। वह शांति और स्वतंत्रता से सिर्फ अपने माता पिता के चिल्लाने और प्यार रहित आदेशों के कारण प्यार करती है। वह शांति और स्वतंत्रता से, पीस और फ्रीडम से सिर्फ अपने माता पिता के चिल्लाने और प्यार रहित आदेशों के कारण प्यार करती है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Acne, pimples. The instructions, or rather the cold commands of Amanda's parents continue. She is asked not to eat chocolates as she will develop acne on her face. It implies care and attention towards the external appearance and its values. She is made conscious of the natural phenomena of developing acne. This again is an indication of the value and necessity of social dispensation of life. Her parents nagging in, "Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda?" is cruel and monstrous in the sense that it is simply killing Amanda's spontaneous growth. This also expresses her parents' anger as she is scolded now. The value of appearance in the society gains more significance than the natural growth. अमांडा के पेरेंट्स के जो इंस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू रहते हैं और अब उसे चॉकलेट खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इससे उसके फेस पे फुंसियाँ आ जाएगी। मीन्स अब उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस की ओर ध्यान दिया जा रहा है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। इसमें उसके माता पिता द्वारा उसे तंग करना इस तरीके से निर्दयी और मोनेस्ट्रस है कि अमांडा के जो नेचुरल डेवलपमेंट है, जो नेचुरल ग्रोथ है, उसको किल कर रहा है, उसे मार रहा है। उसके पेरेंट्स के गुस्से को भी एक्सप्रेस करता है, उसे बार बार डांटा फटकारा जाता है कि इस वर्ल्ड में किसकी वैल्यू है, अपीयरेंस की, देन द नेचुरल ग्रोथ। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Tranquil. Tranquil means tranquil, peaceful. Rare, uncommon. Let down, let fall down. Amanda is still in the world of her imagination. She imagines to be the long golden-haired Rapunzel who lived in a castle. Here, Rapunzel is the name of German fairy tale character who was made to live in a high tower. She thinks that Rapunzel's life must have been very peaceful and contented while living in that high tower, but she doesn't want Rapunzel's fate that was meted out to her. She doesn't want to let down her bright hair. She seeks Rapunzel-like life far away from the life she is at present living. The inhuman treatment has sapped Amanda's inclination towards human society. She doesn't want any other person with her, as that would mean
repetition of her suffering emotionally. She doesn't have any faith in the human society and its cruel demands on her freedom and personal space. अमांडा अब भी अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में, और अब वो गोल्डन हेयर वाले रैपुंजल के बारे में सोचती है जो एक कैसल में रहती थी। रैपुंजल जर्मन फेरी टेल्स का एक करैक्टर है जो एक ऊंची टावर, एक ऊंची मीनार में जिसे रहना पड़ा था। वह सोचती है कि रैपुंजल का उस ऊंची मीनार में रहते हुए जो जीवन था, उसकी लाइफ थी बहुत ही पीसफुल थी और सेटिस्फैक्ट्री थी। बट वो रैपुंजल का भाग्य भी नहीं चाहती है क्योंकि वो अपने हेयर्स को नहीं कटवाना चाहती। वो इस टाइम जो लाइफ स्पेंड कर रही है उससे दूर रैपुंजल जैसा जीवन वो चाहती है। अमांडा के जो ह्यूमन सोसाइटी की ओर जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो अमांडा का ह्यूमन सोसाइटी की ओर जो लगाव है वो अमानवीय व्यवहार के कारण ख़त्म हो गया है। अब वो अपने साथ किसी को भी नहीं चाहती क्योंकि अगर वो किसी के साथ में रहेगी तो वो क्या होगी, इमोशनली हर्ट होगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। सल्किंग, गेटिंग बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा होना। मूडी, चेंजिंग मूड्स। Nagged, teased. Amanda's parents still continue with their harsh instructions. However, Amanda still remains in her own imaginative world. The parents believe that Amanda is not reacting and that is bad. They are more worried about their impressions in society. It is clear in anyone would think that I nagged at you. Apparently, they do not want the society to know they are nagging Amanda. They are worried about how the society will perceive them through. They are worried about how the society will perceive them through Amanda's remaining in a foul mood. They are concerned with establishing a fair balance between what Amanda wants and what the society expects of Amanda. This is a cruel situation as Amanda's parents are harming Amanda's natural growth due to the compulsions at societal level. अमांडा के पेरेंट्स अपने इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू रखते हैं, पर अमांडा अब भी अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में है। अमांडा के पेरेंट्स वरीड होते हैं कि अमांडा कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रही है और ये बुरी बात है। अब वो समाज में अपने इम्प्रेशन से भी वरीड है और ये हमें किससे पता चलता है? एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। क्लियरली वो नहीं चाहते कि समाज उन द्वारा अमांडा को तंग करे जाने के बारे में जाने। वो नहीं चाहते कि समाज को पता चले कि वो अमांडा को तंग करते हैं। वो वरीड है कि अमांडा जो कि एक मूडी बन चुकी है, अगर सोसाइटी में, अगर समाज में इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। अमांडा क्या चाहती है और अमांडा से समाज में क्या एक्सपेक्टेशन है, पीस के संतुलन को बनाने। वो अमांडा के पेरेंट्स अमांडा क्या चाहती है और अमांडा से समाज क्या चाहता है, इसके बीच के संतुलन को बिठाने से वरीड है। अमांडा के पेरेंट्स सोसाइटल लेवल के कारण को हर्ट कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। You have done this poem, students. I hope that you get it. Bye bye.